Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we are discussing important current affairs for 20th of January. Do pay attention to the important one-liners and important key points that I am discussing in this session. In this video we are talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to West Bengal and Assam. Then we are talking about India's unemployment rate. Then we are talking about Rabi season, Rabi crops we are talking about. Next thing we are talking about is 200 automatic weather stations has been deployed recently, right? All these things and many more will be discussed, so stay tuned with us till the end. If you are new here, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs. Let's move to some one-liners. First is banking and finance. CCI has approved Nippon Steel Corporation's acquisition of Kawasaki Harima Corporation. So Nippon Steel will be acquiring Kawasaki Corporation. Then SBI State Bank of India promotes India-Israel trade in rupees as FTA talks gain momentum. FTA is your free trade agreement. Then first meeting of the Payments Regulatory Board held under the RBI Governor Sanjay Malhotra. Then Exim Bank, that is your Export and Import Bank of India, has raised $1 billion through dual tranche US dollar bonds in the first 2026 debt issue. Then India's GDP projected to grow by 9% in FY26 as per the data released by Indra. Then DICGC has issued 5% of bank deposit fund balance to raise 2.29 lakh crore as of March 2025. Then State Bank of India again, they have launched first global capability center in Bengaluru, Karnataka. Then Goldman Sachs projected India's GDP growth at 8% in FY27. Amazon Pay, they have launched fixed deposits through app in partnership with NBFCs and various banks. And IDFC First Bank, they have launched Zero Forex Diamond Reserve Credit Card for global travelers. Then some national affairs students. UIDAI, they have launched a mascot by the name UDAI to make services more people friendly. This is a new mascot that has been unveiled by them. Then India became the first country to commercially produce bio-bitumen for sustainable road construction. Then Naguri Ashwagandha gets the GI tag. Then Simply Learn, they have partnered with India AI Mission. This was launched by MEITY to launch UA AI for all foundational course. Then New Delhi World Bank Fair 2026 began at Bharat Mandapam, which is in New Delhi. Then Uttarakhand Police has topped the ICGS 2.0 ranking. New reed snake species Calamaria mizoraменsis discovered in Mizoram, and on the name of Mizoram state only it was named. Then India Energy Week 2026 to be held in Goa from 27 to 30th of January. India's first fully paperless district judiciary inaugurated in Kallapitta, Kerala, and I gave you this homework also yesterday, important one. Then Bengaluru has topped India's 2025 women-friendly cities ranking for safety and employment. Then some appointments and resignation. Justice Revati Mohite Dere sworn in as the first women Chief Justice of Meghalaya High Court. Then Soman Sen sworn in as the new Chief Justice of the Kerala High Court. Then Meta appointed Dinah Powell McCormick as President and Vice Chairman. Justice A. Mohammad Mustaq sworn in as the 24th Chief Justice of Sikkim High Court. Prakash appointed the CEO of Health Insurance Ecosystem by General Insurance Council. Then next is Ida Liu appointed as the CEO of HSBC Private Bank. Then Bala Subramaniam assumed the charge as the Chairman of Atomic Energy Regulatory Board. Then Ramesh Kumar Juneja assumed the charge as the Chairman of the Council for Leather Exports. So these are certain one-liners. Now let's move to the main content. Let's start with national affairs. First, we are talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to West Bengal and Assam from January 17 to 18. See, first thing remember, this is the third term of Prime Minister Narendra Modi, and in 2026 we will be having the BRICS chairmanship. The logo here is of Lotus. Apart from this, we will be hosting the Commonwealth Games in 2030, and we have also bid
for Olympic Games, Winter Olympic Games for 2036. This is yet to be finalized, but we will be hosting this where in Ahmedabad, Gujarat. Coming back, Prime Minister Narendra Modi was on a visit to West Bengal and Assam from 17th to 18th of January. Now, when he is on a visit, certain infrastructure development projects comes up, then various cultural and social engagement takes place. Right? If we talk about his visit in West Bengal, he laid the foundation stone for multiple rail and road infrastructure worth 3,250 crore rupees and also flagged off India's first Vande Bharat sleeper train, that is between Howrah in West Bengal and Guwahati in Assam. He also laid the foundation stone for four major railway projects in West Bengal and also virtually flagged off four new Amrit Bharat Express trains and two new train services. Then on his visit to Assam, he took part in the Bodo cultural program and attended Bagurumba Dohu 2026. It was in Guwahati, Assam. Then he inaugurated also Kaziranga Elevated Corridor project, that is an 86-kilometer long elevated corridor worth 6,950 crore rupees. So if we see in a whole, he flagged off in West Bengal, he launched infrastructure projects worth 3,250 crore rupees, flagged off India's first Vande Bharat sleeper train, foundation stone for four major railway projects were launched, then new Kokobehar Bahamat railway section was launched, four Amrit Bharat trains were launched, right? Then apart from then Assam, he attended the Bagurumba Dohu 2026. Next is India's unemployment rate, right? See, unemployment rate is high in India. Reason being is the population. We are the most populated country in the world, and we are seeing that every year large amount of youths are coming in the labor market. So we are also seeing a lot number of skills development projects are being launched in India. Multiple organizations, even Ministry of Skill, they are focusing skill development and entrepreneurship. They are focusing on generating job employment. How? By providing skills, right? If the youth will be skilled, then these companies, right, they will be hiring the youth, right? They will become job ready and these companies will be hiring them. Also, the government is focusing on MSME, and because this MSME is one of the largest source of job employment in India. So if we talk about this data, unemployment rate, it remains stable at 4.8% in December 2025. If we compare this to November month, it was 4.7%. Here further, if we talk about survey, this survey covered almost 3,73,000 people. This data is released by NSO, National Statistical Office. It comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Here, if we talk about the unemployment rate for the rural area, it is 3.9. For urban, it is 6.7. Whereas if we talk about labor force participation rate, it was 56.1%. Female labor force participation 35.3%, and WPR, that is your worker population ratio, it is 53.4%. Next is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have recently released a report that is talking and saying that India's rabi sowing has risen by 2.8% to 64.42 million hectares. That means during the rabi season, we are seeing that the amount of land that is being sown has increased by 2.8%. Right? These rabi crops, these are basically the winter season crops. Correct? Take a note of this. Last year, the area sown was 62.6 million hectares, and this year it is 64.42 million hectares. So this is an increase of almost 2.8%. If we talk about some rabi crops, which are the rabi crops? Wheat, pulses, oil seeds, right? Next is Union Minister of State Dr. Jitendra Singh has announced the deployment of 200 automatic weather stations across 4 cities. So 200 automatic weather stations has been deployed. What they will do is they will collect the data related to weather. They will be feeding the data into various models, and these models will be giving analysis of the data, and based on this analysis, meaningful output will be released, and this will be utilized for making better decisions. These models, these data, right, this analysis will help even the farmers for their sowing of the crops. Correct? So 200 automatic weather stations has been deployed across 4 major metropolitan cities. This announcement was done during the 151st Foundation Day. This is the 101st Foundation Day of what?
This is the 101st foundation day for IMD, India Meteorological Department. Right, students, take a note of this. Next is Dr. Jitendra Singh has launched India's first open sea marine fish farming project in ANN Islands. What is this? That is your Andaman and Nicobar Islands. So Dr. Jitendra Singh, right, they have launched the first open sea marine fish farming project. Students, in last video also I have discussed this, that India is focusing heavily on fish farming, on fishing, on maritime economy, and we want to grow this. Reason being is that a lot of India has a lot of coastal area, right, and we are now using this to grow our economy for farming of the fishes. And because a lot of population in India is based on the fish farming on these, and with this we will not just cater to the in-house demand for the seafood, but will also export. And in last video we also discussed that India has partnered here with also Israel for the same. Correct? And this is the first open sea marine fish farming project in Andaman and Nicobar Island. Next is Bhupendra Yadav has launched second nationwide dolphin survey in Bijnor, Uttar Pradesh. I repeat, Union Minister Bhupendra Yadav has launched the second nationwide range-wide estimation of the riverine and estuarine dolphins under the Project Dolphin. In simple terms, remember, this is to save dolphins, right, to safeguard the dolphins, to conserve the dolphins, specifically in the Brahmaputra region and Ganga region, right. Here in these rivers, the dolphins will be conserved. Next is Ministry of MSME. They have approved the establishment of MSME Technology Center at Pandoga and Parwano, that is in Himachal Pradesh. So establishment of a MSME Technology Center. How this MSME Technology Center will be beneficial is 13 new Technology Center of Excellence centers will be established, right. Here what these MSME, how they will be benefiting this MSME is that are the skills that are required to grow the MSMEs will be taught here, right. Skilled manpower will be skilled here. Technical services or technical knowledge will be imparted to those individuals. Here focus will be on manufacturing sector, that how can we enhance the manufacturing sector. Also fierce topic of today's world, that is your artificial intelligence, machine learning, cyber security, all of them will be focused, and these skills will also be given to the individuals here, right. So it is MSME, Ministry of MSME, they have approved the establishment of this MSME Technology Center at the Pandonga and Parwano in Himachal Pradesh. Moving on, students, next is international affairs. India, Sri Lanka and Maldives, they have conducted the 17th edition of a trilateral coastal exercise by the name Dosti 17. Dosti 17. This 17 means this is the edition of this exercise, 17th edition of this exercise. And trilateral means 3 nations are taking part in this exercise. Which are those nations? India, Sri Lanka and Maldives. What is the location where this exercise was held? In Maldives. This exercise held from 17th to 19th of January. Important, students. This will be held in 2 phases, a sea phase and harbor phase. Last edition also, that was the 16th edition, was also conducted in Maldives only in 2024 February month. Next is banking and finance. World Bank has approved $286 million for West Bengal healthcare. So this amount will be given by this amount of money will be given by World Bank, and it will be utilized for growing the healthcare sector in West Bengal, to improve the healthcare sector in West Bengal. New equipments, new treatments, new doctors' salaries will be provided here. New hospitals, new healthcare ecosystem will be established. Correct? And here healthcare services for the people above 30 years of age will be provided. Correct? The loan amount is $286 million, and this loan is for 16.5 years, and a 3 years grace period will also be provided. And it is the IBRD, that is an arm of World Bank only. They will be providing the loan here to West Bengal. Focus here will be on the non-communicable disease, and the focus will be on improving the quality of life and life expectancy. Next is State Bank of India Life
SBI Life, they have launched Smart Platina Advantage Guaranteed Saving Plan. Take a note of this. This is SBI Life Smart Platina Advantage. This is an individual, non-linked, non-participating life insurance saving plan. It is offering long-term guaranteed benefits and life insurance protection to support the financial goals across various life stages. Right? Minimum premium here will be of 50,000 rupees per year. Policy term will be of 15 years, 20 years or 30 years. Next is IGGEFIL, that is your IREDA, Global Green Energy Finance IFSC Limited. See, IRDA is basically an organization that is working towards developing the green projects across India. And this is the organization that is funding those green projects. So they have sanctioned the first international green loan for Zambia solar project. So in Zambia, a solar project is being established, and for that this organization is sanctioning the loan, right? This is the first international green loan. That is, this green loan means this amount of money that will be given through loan here will be utilized for developing the green and renewable energy, and it will be where the location is Zambia. What is the loan amount? It is $22.5 million. Right now, this solar project, it will be of 100 megawatt. Next is economy and business. BSNL and Viasat, they have collaborated for Indian Navy SATCOM upgrade. I repeat, Bharat Sanchar Nigam Limited and Viasat Incorporation, that is an American satellite communication firm, has announced a partnership to support the next phase of the Indian Navy satellite communication upgrade program. Take a note of this, students. Here what this will do is, this will enhance the communication for the BSNL users, right? Here you will be seeing better programs or better connectivity will be provided through this partnership. It will strengthen the coverage, it will enhance the communication, and also it will provide a better gateway integration and support the naval sat communication. What is sat communication also, students? Satcom means satellite. SAT stands for satellite and COM stands for communication. So better satellite communication will be provided here, and the communication will be utilizing satellites. Also, students, one more thing you need to remember. In today's world, we are seeing that various organizations, they are setting up a constellation of satellites around Earth that will be providing satellite internet. Right? One such example is the company of Elon Musk, that is Starlink. They are also partnering with various organizations in India to launch this satellite Starlink in India. Next, okay, one more thing. Remember, if we are talking about satellite, students, in today's world, we are seeing that quantum satellites are also being launched that are considered hack proof, because we are seeing that on Earth the quantum technologies is in prevalence, right? We will be seeing quantum computers very soon, right? And because of quantum, we can see that the break or the hacking, the encryption of the satellites becomes very easy. So in order to make sure that the satellites don't get hacked, the satellites are not prone to any encryption or decryption, or any foreign company or our enemy of our country is not utilizing our data or our satellites and hacking it. So in order to conserve that, we are seeing that quantum satellites will also be launched. Next is appointments and resignation. Shaya Muhsin Mohammad Al Zaidani has appointed as the Prime Minister of Yemen. Directly remember this, because Yemen's Prime Minister Abdul Malik Said has resigned. Next is President Draupadi Murmu appointed Praveen Vashishta as the Vigilance Commissioner in CVC. CVC is your Central Vigilance Commissioner. He has been appointed for 4 years, right? Take a note of this. Direct question can be asked here, that who has been appointed as the Vigilance Commissioner in CVC. So Praveen Vashishta has been appointed here. What is the tenure? 4 years. The next, ICICI Bank reappointed Sandeep Bakshi as the Managing Director and Chief Executive Officer till 2028. Right? Next is important is, we are talking about the Indian Army Day. It is observed on 15th of January. And this Indian Army Day, this is the 78th edition or 78th observance of the Indian Army. This day marks the appointment of General K.M. Karyappa as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Army in 1949. Although if we talk about Indian Army, it was established in 1895. Correct? Next. So students, these were your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be beneficial for you all.
Neil Mohan was named as the Times 2025 CEO of the Year in December. Leads which organization global company? He leads YouTube. Right, option 5 is rightly mentioned here. Next, how many new members were added when UNESCO expanded their global network of learning cities in December? So, a total of 72 new members were added here, bringing the total membership to 425 cities across 91 countries. This global network of learning cities, it was launched by UNESCO in 2013 and began officially accepting city declarations in 2025. The aim here is to support and promote policy dialogue, experience the exchange and practice sharing among the member cities. Next, which bank was named Global Bank of the Year 25 by the Banker, a Financial Times publication in December? So, which bank was named as the Global Bank of the Year? It is DBS Bank. Next, who was featured in the 2026 Forbes 30 Under 30 list in finance for contribution to data-driven financial innovation in December? So, right option is Arkin Gupta. Next, choose the entity honored with the Person of the Year title for 2025 by the Time magazine in December. Right option is Architects of Artificial Intelligence. Next, identify the wetland that along with Kopra Jalashay was designated as India's 95th and 96th Ramsar sites under the Ramsar Convention on Wetlands. So identify that wetland. Which is it? It is Shishilre Lake. Silisre Lake. Right? Where is this? This is in the Alwar district of Rajasthan. And this Kopra Jalashay, it is in Chhattisgarh. Right, they are the 95th and 96th Ramsar sites of India. Next, who was sworn in as the new Prime Minister of Czech Republic in December? So, Andrej Babis was appointed as the new Prime Minister of Czech Republic of India, and he succeeded. Andrej Babis succeeded Peter Fiala. Next, name the galaxy that Indian astronomer discovered using James Webb Space Telescope deep field data in December, revealing a 12 billion year old grand design spiral structure. So the galaxy was named as Alkananda. Next, who won his maiden F1 Drivers' Championship title in 25 despite Max Verstappen winning the season closing Abu Dhabi Grand Prix? So Lando Norris has won the F1 Drivers' Championship title, but who won the season closing Abu Dhabi? It was won by Max Verstappen. Lando Norris, he drives for McLaren. Next, what was India's overall position in the medal standing at the International Shooting Sports Federation World Cup final held in Doha, Qatar? So, India, our country, stands at second position in the medal tally here. First was China with a total of 9 medals, and India with a total of 6 medals on the second position. Next, who won the International Chess Federation circuit in December? Also the first Indian to qualify directly for the Candidates Tournament 2026. So, R. Pragnanda here has won the fight circuit in December 2025. Next, identify the venue that hosted the FEI Asian Equestrian Championship in December, where Thailand topped the event with 7 medals and India secured 5 medals. So, we have to find the venue here. Pattaya, Thailand is the rightly mentioned. Right, and Thailand here secured the top position with a total of 7 medals, where 3 gold, 0 silver and 4 bronze are there. Correct. And we India, if we talk about, claimed 5 medals, where 1 was gold, 4 silver and 0 bronze. Next, choose the country that won the championship at the 14th edition of the FIH Men's Junior Hockey World Cup held from 28th of November to 10th of December, where India secured the bronze medal. So, right option is Germany won the championship at the 14th edition of the FIH Men's Junior Hockey World Cup. Next, identify the country that was approved by the Commonwealth Sports in December to host the inaugural Commonwealth Kho-Kho Championship scheduled from 9th of March to 14th of March 2026. It is our country, India. Next, name the country that clinched the first ever mixed team squash World Cup title in December by defeating Hong Kong, China with 3-0 scoreline at the final held in Chennai, Tamil Nadu. Right, so name the country that clinched the first ever maiden mixed team
squash World Cup title? It is our country, India again, right? This is our first mixed team, first ever 2025 squash World Cup title. Next, name the former Union Minister who served as the Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh who passed away in December. So, right option is Shivraj Vishwanath Patil Chakurkar. Next, who unveiled the autobiography The One Cricket, My Life and More in December, which captures his journey from early cricketing dreams to international success and personal challenges and was published by HarperCollins India. Right option is Shikhar Dhawan, a very famous cricketer, right? And HarperCollins India will be publishing his autobiography. Next, the International Civil Aviation Day is observed annually on 7th December to highlight the role of civil aviation in global social and economic development. What was the theme of the 2025 observance here? Theme being Safe Skies, Sustainable Future Together for the next 80 years. This is the theme here that I want you all to take a note of. Next, identify the company that signed a memorandum of understanding with the government of Karnataka in December to develop ITIP, that is India Taiwan Industrial Technology Park. Right? So right option is Allegiance International Company Limited. Next, which Indian state became the first in the country to launch Mahacrime OS AI platform for cybercrime investigation in December? This was launched by Maharashtra state. So these MCQs are quite beneficial for you all students, right? You must watch these videos again and again. Coming back to the question, who became the first cricketer to reach 600 wickets in the competitive T20 cricket during the December 2025 World Cup International T20 season opener? So who became the first cricketer to reach 600 wickets? So Sunil Narayan. Next, identify the entity that decided to discontinue the business to consumer operations of its hyperlocal shopping app PIN code in order to prioritize business to business solutions for offline retailers in December 2025. Right option is PhonePe. Next, which of the organized the first ever Global South seminar on public financial management on 5th December in New Delhi in collaboration with the Ministry of External Affairs. So right option is Office of the Controller General of Accounts. Right option is option 1. Next, name the Indian cricketer who became the first from India to hit 100 or more sixes in T20 in a single calendar year, achieving this feat in December. Right option is Abhishek Sharma. He is a young cricketer, correct, and he became the first from India to hit 100 or more sixes in T20 cricket in a single calendar year. Next, identify the RuPay credit card on UPI product launched by City Union Bank and Salary Say in December, designed exclusively for salaried employees in India. So it is Level Up credit card. This is the name of this RuPay network based credit card. Next, Kaziranga National Park and Tiger Reserve received 35 captive bred critically endangered vultures in its 6th edition area in December. Where is this national park located? So two questions emerging here. First, you will be knowing that 35 bred critically endangered vultures were received by this Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Next question, where is it located? It is in Assam. Next, identify the country that became the first in the world to legally ban social media accounts for children under 16, with the nationwide law coming into force in December. So right option is Australia. Next, name the Indian bowler who became the first from India to take 100 wickets in each of the 3 international formats, that is ODI, T20, right, and Test, correct. So Indian bowler who became the first in India to take 100 wickets in each of the 3 international formats is Jasprit Bumrah. Moving on, by which year has the government of India set a target to achieve 100 million tons of coal gasification under the National Coal Gasification Mission as announced in December? So the target year is 2030 here. Next, identify the Indian dairy brand that renewed its partnership with Argentina Football Association in December, continuing as the official regional sponsor through the 2026 FIFA World Cup cycle. It is Amul brand. Right, take a note of this. So these are your important current affairs, students. Now let's move to the revision part. Next, students, is our homework section.
First question, what is the rank of India in the Asia Power Index? Give me top 3 here. Then second question, tell me recently who has been appointed as the chairperson? Who has been appointed as the chairperson of International IDEA? Tell me this. Then third question, which is the world's largest city? World's largest city. Also give me the world's most populated city, right? And which are the Indian cities in this rank, or what are the rank of the India's major cities such as Delhi and Mumbai? Then fourth question, tell me recently Oxford University Press, according to them, what is the word of the year 2025? And fifth question, students, tell me recently who has been appointed as the MD and CEO of, or tell me who has been appointed as the managing director? Who has been appointed as the managing director of LIC, new managing director of LIC, and who he will be succeeding? So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट टू वेस्ट बंगाल एंड असम। देन हम बात करें इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। देन हम बात करेंगे राबी सीजन के बारे में, जो कि विंटर सीजन होता है बेसिकली ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। देन हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डिप्लॉयमेंट अप किया भी 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का क्रॉस 4 सिटीज़, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा सभी बच्चों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Let's move to some one-liners. First is banking and finance. CCI has approved Nippon Steel Corporation's acquisition of Kawasaki Harima Corporation. So Nippon Steel will be acquiring Kawasaki Corporation. Then SBI State Bank of India promotes India-Israel trade in rupees as FTA talks gain momentum. FTA is your free trade agreement. Then first meeting of the Payments Regulatory Board held under the RBI Governor Sanjay Malhotra. Then Exim Bank, that is your Export and Import Bank of India, has raised $1 billion through dual tranche US dollar bonds in the first 2026 debt issue. Then India's GDP projected to grow by 9% in FY26 as per the data released by Indra. Then DICGC has issued 5% of bank deposit fund balance to raise 2.29 lakh crore as of March 2025. Then State Bank of India again, they have launched first global capability center in Bengaluru, Karnataka. Then Goldman Sachs projected India's GDP growth at 8% in FY27. Amazon Pay, they have launched fixed deposits through app in partnership with NBFCs and various banks. And IDFC First Bank, they have launched Zero Forex Diamond Reserve Credit Card for global travelers. Then some national affairs students. UIDAI, they have launched a mascot by the name UDAI to make services more people friendly. This is a new mascot that has been unveiled by them. Then India became the first country to commercially produce bio-bitumen for sustainable road construction. Then Naguri Ashwagandha gets the GI tag. Then Simply Learn, they have partnered with India AI Mission. This was launched by MEITY to launch UI AI for all foundational course. Then New Delhi World Bank Fair 2026 began at Bharat Mandapam, which is in New Delhi. Then Uttarakhand Police has topped the ICGS 2.0 ranking. New reed snake species Calamaria mizoramensis discovered in Mizoram, and on the name of Mizoram state only it was named. Then India Energy Week 2026 to be held in Goa from 27th to 30th of January. India's first fully paperless district judiciary inaugurated in Kallapitta, Kerala, and I gave you this homework also yesterday, important one. Then Bengaluru has topped India's 2025 women-friendly cities ranking for safety and employment. Then some appointments and resignation. Justice Revati Mohite Dere sworn in as the first women Chief Justice of Meghalaya High Court. Then Soman Sen sworn in as the new Chief Justice of the Kerala High Court. Then Meta
appointed Dinah Powell McCormick as President and Vice Chairman. Justice A. Mohammad Mustaq sworn in as the 24th Chief Justice of Sikkim High Court. Prakash appointed the CEO of Health Insurance Ecosystem by General Insurance Council. Then next is Ida Liu appointed as the CEO of HSBC Private Bank. Then Bala Subramaniam assumed the charge as the chairman of Atomic Energy Regulatory Board. Then Ramesh Kumar Juneja assumed the charge as the chairman of the Council for Leather Exports. So these are certain one-liners. Now let's move to the main content. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पे। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल एंड असम के विजिट पे थे 17-18 जनवरी को। देखो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म है। इसी के अलावा अगर हम देखें हमारा देश इंडिया 2026 में क्या होस्ट करने वाला है, हमारे पास ब्रिक्स की चेयरमैनशिप रहेगी। यहाँ पे लोटस इसका सिंबल रहेगा। फिर 2030 में हम कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करेंगे। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में होस्ट करेंगे। हमने 2036 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे उसके लिए भी बिडिंग की है। इसका भी फाइनलाइजेशन रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन स्टिल वी आर होपिंग कि हमें अगर ये मिलता है तो हमारी डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल और असम की विजिट पे थे, जिससे क्या होगा यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है वेस्ट बंगाल का, तो 3,250 करोड़ रुपए के मल्टीपल रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। देन यहीं पे इन्होंने इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लॉन्च किया बिटवीन हावड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड गुवाहाटी इन असम। तो ये मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशन भी पता होना चाहिए किन दोनों लोकेशंस के बीच में इसको लॉन्च किया गया। देन 4 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। देन 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम असम की बात करें तो ये बोडो कल्चरल प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। देन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि 86 किलोमीटर का कॉरिडोर है, इसके भूमि पूजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड भूमि पूजन इन्होंने करा। यहाँ पे 6,950 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। देखो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से मिलती है, राइट। जो एक जॉब पे जितने लोग अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही कितने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, करेक्ट। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखते हैं कि बहुत जॉब इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसी को काउंटर करने के लिए हमारा देश स्किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। आप देखेंगे कि डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर हुआ है ताकि स्किलिंग के ऊपर काम किया जा सके, लोगों को ट्रेन किया जा सके आज की टेक्नोलॉजी में ताकि वो जॉब रेडी हो सके एंड मार्केट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सके। ठीक है, इसी के अलावा ध्यान देंगे कि अभी जो हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, वो कितनी है? 4.8% दिसंबर के महीने में। यही अगर मैं डाटा नवंबर मंथ का देखूं तो वो था 4.7% का। ठीक, यहीं पे अगर इसमें देखें हम तो 3,73,000 लोगों का सर्वे करा गया, जिसमें से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 3.9%, अर्बन की बात करें तो 6.7%, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56.1, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35.3, वहीं पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 53.4% रहेगी। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इंडिया के राबी सीजन की बात की गई। राबी सीजन को ही हम विंटर सीजन कहते हैं। यहाँ पे डाटा बता रहा है कि 2024 से 2025 के बीच में अगर हम देखें तो 2.8% का राइज हमें देखने को मिला है कि कितना जो क्रॉप्स है उसका ग्रोन एरिया होता है उसमें हमें कितना इंक्रीज देखने को मिला। तो 2.8% का इंक्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो सोएबल एरिया था, मतलब जो लैंड पे उपजाऊ जमीन थी, जिस जमीन पे उगाया गया था, वो कितना था? 62.6 मिलियन हेक्टेयर्स। लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो गया? 64.2 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया है, जो कि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2.8% का इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर विंटर सीजन की हम इनको बात कर रहे हैं, राबी सीजन, तो कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं यहाँ पे? जैसे व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अनाउंस किया
200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को डिप्लॉय किया जाएगा 4 सिटीज़ में, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? पहली चीज़ आप ये समझिए, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं एआई आ गया है, राइट? हम मशीन लर्निंग की मदद लेते हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि जो हमारा डाटा होता है ना, हम उसका मीनिंगफुल आउटपुट ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट? अगर हम और कोई प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें बेटर मिलेगा, अगर कोई हम पॉलिसी ला रहे हैं उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है? एंड कोई हम बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं किसी एरिया में, वहाँ पे क्या फ्लडिंग एरिया, फ्लड होती है ज़्यादा या बारिश ज़्यादा होती है, तो उससे हम वेदर का डाटा लेकर उससे हम एनालिसिस करके हम पहले से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बारिश होगी या इतना एरिया होगा, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब फार्मर्स हैं, उनको कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कौन से महीने में उनको क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, बीज बोने चाहिए, तो इन सब का डाटा मिलता रहता है। वेदर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फार्मर्स के लिए, राइट? तो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डिप्लॉय किए गए हैं 4 सिटीज़ में, 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रहेंगे। 151वें फाउंडेशन डे था ये IMD का, जिसके दिन ये अनाउंसमेंट की गई। मूविंग ऑन, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 200 की बात किया है, कहाँ पर रहेंगे? 50 दिल्ली, 50 मुंबई, 50 चेन्नई एंड 50 पुणे में। इसके बाद आ जाते हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। हम काफ़ी दिनों से ये डेली न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि फिशिंग के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, मरीन सेक्टर को ग्रो करने के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है, एक्वाकल्चर के ऊपर काम किया जा रहा है। इवन कल ही हमने डिस्कस किया कि इंडिया एंड इजराइल के बीच में भी एक पार्टनरशिप हुई है जहाँ पे फिश फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर को ग्रो करने का काम किया जाएगा। देखो, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री बहुत बड़ी है, राइट? तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सी फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। हम काफ़ी मात्रा में सी फूड को ग्रो कर सकें एंड उसको इन हाउस तो डिमांड को पूरा ही करें, बट हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, इसलिए इंडिया फोकस कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है तो उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। इससे हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट रहेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने सेकंड नेशन वाइड डॉल्फिन सर्वे को लॉन्च किया बिजनौर यूपी में। डॉल्फिन सर्वे रहेगा डॉल्फिन की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इससे होगा क्या, मेन एम क्या है, डॉल्फिन कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, डॉल्फिन को हम कंजर्व कर सके। फोकस रहेगा गंगा बेसिन, लेकिन ब्रह्मपुत्र रीजन में भी यहाँ पे इसको करा जाएगा। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इन्होंने अप्रूव किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर एट पंडोंगा एंड परवानो इन हिमाचल प्रदेश। देखो, ये टेक्नोलॉजी सेंटर से होगा क्या, आप ये समझिए, जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि MSME में लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, ठीक है? कहाँ पे, किस रीजन में होगी, किस चीज़ से बेस्ड होगी, स्किल बेस्ड होगी। अगर आपको स्किल्स आती है तो जॉब मिल जाएगी, तो लोगों को ट्रेन किया जाएगा, लोगों को नई टेक्नोलॉजीज, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इनके ऊपर काम किया जाएगा, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मशीन्स हैं, राइट, उनको कैसे चलाते हैं, उनके ऊपर लोगों को ट्रेन किया जाएगा, राइट? उसको ठीक कैसे करते हैं, उसके ऊपर ट्रेन किया जाएगा, प्रोसेसेस को समझाया जाएगा। तो इसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेंगे, MSME बेस्ड रहेंगे, एंड कहाँ पर, पंडोंगा एंड परवानो हिमाचल प्रदेश में, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज दोस्ती की। दोस्ती 17 मतलब 17th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, राइट? कहां पर, मालदीव्स में, मालदीव्स में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। ये लोकेशन जरूर याद रखेंगे। ये 17वां एडिशन है। इसका जो 16वां एडिशन था वो भी मालदीव्स में ही हमें देखने को मिला था। चलिए, इसके बाद आते हैं फिर वर्ल्ड बैंक पे, राइट? वर्ल्ड बैंक का आर्म है IBRD। इनके द्वारा अभी वेस्ट बंगाल में हेल्थ केयर को ग्रो करने के लिए, कि 30 साल से जो लोग ऊपर हैं उनको हेल्प की जा सके फंडिंग में, उनकी हेल्थ केयर में, राइट? न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ला सकें, नई मशीन्स ला सकें, एंड प्रॉपर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर बनाया जा सके, मशीन्स, मेडिसिन्स, जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो यहाँ तक पहुँच सके। इसीलिए ये $286 मिलियन का लोन दिया जाएगा। 16.5 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा इस लोन का, एंड 3 साल का ग्रेस पीरियड भी यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है SBI लाइफ। इन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज गारंटेड सेविंग प्लान। ये एक सेविंग प्लान लॉन्च किया गया है, SBI लाइफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, राइट? एंड यहाँ पे जैसे बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, इन सब का ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा। ये लॉन्ग टर्म गारंटेड सेविंग प्रोवाइड कराता है, लाइफ कवर प्रोवाइड कराता है, एंड जैसे मैंने बताया बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड सेकेंडरी इनकम के ऊपर इसका
टारगेट रहता है। जो प्रीमियम यहाँ पे दिया जाएगा 500 रुपये हर साल यहाँ पे प्रीमियम दिया जाएगा। नेक्स्ट है IREDA। देखो सबसे पहले समझो IREDA कंपनी करती क्या है। ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना उनकी फाइनेंसिंग करती है, उनको सपोर्ट करती है फाइनेंसिंग में ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सके ग्रीन एनर्जी में। करेक्ट। तो IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है IREDA की। इन्होंने पहला इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन दिया है $22.5 मिलियन का। ये लोन किसको दिया गया है? स्वर्णा सोलर लिमिटेड को दिया है, जो कि एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करेगा। कहां पे? ज़ाम्बिया में। ठीक है, तो कहां पे करेगा? ज़ाम्बिया में करेगा। कितने अमाउंट का ये प्रोजेक्ट रहेगा? 100 मेगावाट का रहेगा। लोन अमाउंट कितना है? $22.5 मिलियन का ये अमाउंट रहेगा। कौन दे रहा है? IREDA की ही सब्सिडरी है, वो ये पे लोन दे रही है। चलिए फिर आते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। BSNL एंड वाईसेट इन्होंने कोलैबोरेट किया ताकि इंडियन नेवी का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको बेटर किया जा सके। देखो पानी में सिग्नल्स कैसे मिलेंगे? सैटेलाइट से मिलेंगे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको अपग्रेड करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए एंड इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू टेक यहां पे लाने के लिए एंड जो एग्जिस्टिंग टेक है उसको बेटर करने के लिए ताकि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आ सके इंडियन नेवी को, इसके लिए यहां पे BSNL एंड वाईसेट के साथ ये कोलैबोरेशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर आते हैं। शिया मुशीन मोहम्मद अल जिदानी, इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। ये सक्सीड करेंगे अब्दुल मलिक जी सईद जी को, जिन्होंने भी रिजाइन कर दिया है यमन के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। फिर आ जाते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने अपॉइंट किया प्रवीण वशिष्ठा को एज द विजिलेंस कमिश्नर इन CVC। राइट, 4 साल के लिए यहां पे ये अपॉइंट किए गए हैं, ये मार्क करके चलेंगे। टेन्योर क्या रहेगा? 4 साल का। फिर आ जाते हैं ICICI बैंक, इन्होंने रीअपॉइंट कर लिया संदीप बख्शी को एज द MD एंड CEO। कब तक? 2028 तक, तो रीअपॉइंटमेंट रहेगी ये। फिर इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। हम इंडियन आर्मी डे की बात कर रहे हैं। 15 जनवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि दिस डे मार्क्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल KM करियप्पा, जो कि इंडिया के पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। 1949 में ये चीफ बने थे। एंड अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, ये 1895 में स्टैब्लिश की गई थी। राइट, एंड इस साल हमने 78th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया। ये जरूर मार्क करके चलेंगे कि कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल पायलट 1 इन दिसंबर। तो कहाँ पर किया गया? ये वाराणसी UP में करा गया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इटलीज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स एंटोनियो तजानीज विजिट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही रहेंगे तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ अब रिगार्डिंग द अप्रूवल ग्रांटेड बाय यूनियन कैबिनेट। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शंस तो कौन से सही हैं? ऑप्शन B सही है, C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेंसस ऑफ इंडिया 2037, जो कि एक फेज़ में होगा, नहीं तो सिंगल नहीं 2 फेज़ में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। एंड ये इंडिया का पहला फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Next, financial advisory firm Art and Capital released the passport index in December, in which India was ranked 67th globally. Identify the country that topped the index as the world's strongest passport. तो कौन सी यू रहेगी? कौन सी कंट्री? UAE ने यहाँ पे टॉप किया फॉर द 7th consecutive टाइम। यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 67th यहाँ पे रैंक करते हैं ग्लोबली, एंड हमारे पास 74 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस है। नेक्स्ट, नेम दैट कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक MOU इन दिसंबर टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ फार्माकोपिया। तो वो है लाइबेरिया। फार्माकोपिया क्या होता है? बेसिकली दीज आर द बुक्स मैनुअल्स जो आपकी मेडिसिन के ऊपर हैं कि कैसे मेडिसिन बनाई जाएंगी, क्या क्वालिटी रखी जाएगी, क्या उनके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे। राइट, तो अभी लाइबेरिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये MOU साइन किया ताकि फार्माकोपिया सेक्टर के ऊपर स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो भी दिसंबर में रिलीज की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन A सही है, B सही है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, C गलत है। C कह रहा है ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है दैट वीमेन ग्लोबली अर्न 50% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर। नहीं, तो ये गलत है। अगर हम डाटा देखें तो वीमेन अर्न 32% ऑफ द मेंस अर्निंग पर आवर। अब ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 7th यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट असेंबली 7 जो कि 7th एडिशन था, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में देखने को मिला। तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही मेंशन है। थीम ज़रूर याद रखेंगे इस यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की 7th एडिशन की, एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ रेजिलियंट प्लेनेट, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI 5th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY26 जो दिसंबर में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये $700 बिलियन पे है एज ऑफ दिसंबर 28, नहीं नवंबर 28, नहीं ये 700 बिलियन डॉलर पे नहीं है, बल्कि 686.2 बिलियन डॉलर के हमारे अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट सेबी इन्होंने लॉन्च किया प्रवाह इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड कैरी एज रेटिंग्स, राइट। तो मतलब NSE एंड केयर एज रेटिंग्स, इनके द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह, ठीक है, मार्क करेंगे। पूछा जा रहा है प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल अगर क्वेश्चन आए तो प्रवाह स्टैंड करता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। और वी यहाँ पे पूछा गया, वी किस लिए आ जाता है, तो वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, एंड इसको NSE एंड केयर एज रेटिंग्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया RBI अप्रूवल इन दिसंबर टू ऑपरेट एज अ फुल स्टैक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो वो कौन सी फिनटेक कंपनी है, वो है एयरपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड। Next, what percentage of the global real-time payment transaction was contributed by UPI as highlighted in ACI Worldwide's Prime Time for Real-Time 2024 report referenced in December? तो right option है 49%. Next, identify the campaign that, as announced by the Ministry of Finance in December, facilitated the settlement of nearly 2,000 crore rupees in unclaimed financial assets during its initial 2 months. तो कौन सा कैंपेन था वो था आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। एंड यहाँ पे डाटा में देखें तो पहले 2 महीने में ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असिस्ट जो फाइनेंशियल था एसेट्स थे उनको क्लेम किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसीव किया RBI का अप्रूवल इन दिसंबर टू सेटअप इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक फ्रॉड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म है फॉर डिजिटल पेमेंट्स अलॉन्ग विद SBI। तो किस बैंक ने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू सेटअप दिस IDPIC? तो ये कौन सा बैंक रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, व्हेन विल RBI रिसीव द डायरेक्शंस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कैश क्रेडिट करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स कम इनटू इफेक्ट एज ऑफ दिसंबर? तो ये कब से लागू होंगे, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंसिंग वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्लीन एयर प्रोग्राम इन UP एंड हरियाणा? तो $600 मिलियन। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द लोन्स अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। करेक्ट, सॉरी मतलब हमारे लिए इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन ए सही है, बी सी सही है, बी आंसर हमारा सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D सब सरफेस मैपिंग टेक्नोलॉजी फॉर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स इन दिसंबर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस अगर हम देखें तो जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्कुल सही रहेगा। ये 3D सब सरफेस मैपिंग कर रहे हैं ताकि जो वाटर के अंडर का सरफेस है, राइट, उसका प्रॉपर एक मैप मिल सके एंड उसके अगर हमें एक्सप्लोरेशन करना है तो एक बेटर हमारे पास आइडिया, एक प्लान ऑफ एक्शन पहले से हो। नेक्स्ट, नेम द इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने पार्टनर किया लॉकहीड मार्टिन के साथ इन दिसंबर टू एस्टेब्लिश अ MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल हब को इन बेंगलुरु फॉर इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस फ्लीट। तो यह है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज़ किया अपना फ्लैगशिप रिपोर्ट ADO एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इनके हिसाब से इंडिया की GDP ग्रोथ क्या रहेगी फॉर FY26, वो है 7.2%। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने रिसीव किया इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज को ड्यूरिंग द फाइनल ड्रॉ सेरेमनी ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो वॉशिंगटन DC USA में हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एंड ये पहले USA प्रेसिडेंट बने जिनको पहली बार ये फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी ये फीफा पीस प्राइज पहला एडिशन है, मतलब हम बोल सकते हैं इनॉग्रल एडिशन है इस अवार्ड का।
नेक्स्ट, इंडियन ऑरिजिन CEO नील मोहन, ही वॉज नेम्ड एज द टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर, लीड्स विच मेजर ग्लोबल कंपनी। तो ये यूट्यूब इनकॉर्पोरेशन को लीड करते हैं एंड ये 2025 के CEO ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी न्यू मेंबर्स वर एडेड व्हेन यूनेस्को एक्सपेंडेड देयर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज इन दिसंबर। तो 72 मेंबर्स यहाँ पे नए ऐड किए गए थे टू द, एंड यहाँ पे 425 सिटीज़ अभी पार्ट है ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज़ की। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक को नेम किया गया ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स पब्लिकेशन। तो कौन सा बैंक, DBS बैंक को यहाँ पे नेम किया गया एज द ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट, हु वॉज फीचर्ड इन द 2026 Forbes 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर इन फाइनेंस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डाटा ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन इन दिसंबर। तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आर्केन गुप्ता। नेक्स्ट, चूज द आइडेंटिटी जिनको ऑनर किया गया विद द पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल से फॉर 2025 बाय द टाइम मैगजीन इन दिसंबर। तो राइट ऑप्शन रहेगा आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, ऑप्शन 3 राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वेटलैंड दैट अलॉन्ग विद द कोपरा जलाशय वॉज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 95th एंड 96th रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो कौन सी रहेगी, वो है सिलीसर लेक। ये कहाँ पर है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ राजस्थान। ठीक है, एंड कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हु वॉज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक इन दिसंबर सक्सीडिंग पीटर फियला। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे एंड्रेज बाबिस। राइट, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, नेम द गैलेक्सी दैट इंडियन एस्ट्रोनॉमर इनके द्वारा डिस्कवर की गई यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिवीलिंग 12 बिलियन ईयर ओल्ड ग्रैंड डिजाइन स्पायरल स्ट्रक्चर। तो इसका नाम रखा गया अलकनंदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी मेडन F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है डिस्पाइट मैक्स वर्स्टेपन विनिंग द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो कि सीजन क्लोजिंग थी। तो लैंडो नॉरिस के द्वारा यहाँ पे F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया है। राइट, ये मैकलेरन के लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन सेकंड पोजीशन पे थे, यहाँ पर रेडबुल के लिए ड्राइवर है, लेकिन मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा सीजन क्लोजिंग अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इंडियाज ओवरऑल पोजीशन इन द मेडल स्टैंडिंग्स इन द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल जो कि दोहा कतर में हमें देखने को मिला। तो राइट ऑप्शन है सेकंड। राइट, ये व्हाट वाज इंडियाज ओवरऑल पोजीशन, तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली विद 9 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, हु वॉज और किन्होंने जीता भी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन सर्किट को इन दिसंबर एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026। ये है आर प्रगनंदा। राइट, इंडियन ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेन्यू दैट होस्टेड द FEI in Asian Equestrian Championship in December where Thailand topped the event with 7 medals and India secured 5 medals। तो पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हमें देखने को मिला था। करेक्ट, एंड थाईलैंड ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में विद 7 मेडल्स फॉलोड बाय हांगकांग ऑन सेकेंड। नेक्स्ट, उस कंट्री को चूज करो दैट वन द चैंपियनशिप एट द 14th एडिशन ऑफ द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुआ, जहाँ पे इंडिया ने सिक्योर किया ब्रॉन्ज मेडल। तो जर्मनी में ही हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट अप्रूव्ड द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स इन दिसंबर टू होस्ट इनॉग्रल कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 9 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक। तो हमारी कंट्री इंडिया ने अप्रूव किया ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जीता फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल को, एंड ये फर्स्ट टाइम इंडिया के द्वारा जीता गया। मार्क करके चलेंगे, मैंने आंसर दे दिया है। हमने हांगकांग चाइना को हराया बाय 3-0 इन द फाइनल। इवेंट हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में। राइट, ये फर्स्ट एवर मिक्स टीम स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, फॉर नेम द फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जिन्होंने सर्व किया एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो है शिवराज विश्वनाथ पाटिल चारुकर। नेक्स्ट, किन्होंने अनवेल की अपनी ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, तो ये शिखर धवन के द्वारा अनवेल की गई है। करेक्ट, एंड हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। ऑटोबायोग्राफी है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ये एनुअली ऑब्जर्व किया गया 7 दिसंबर को, जो हाईलाइट करता है रोल ऑफ सिविल एविएशन इन ग्लोबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस डे की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की,
तो थीम रहेगी सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 ईयर्स। स्टूडेंट्स ये थीम ज़रूर मार्क करना, पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने एक MOU साइन किया विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ताकि इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क को डेवलप किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है एलिजियंस इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट वो पहली इन द कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म को ताकि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प किया जा सके? तो महाराष्ट्र के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने रीच किया 600 विकेट्स को इन कॉम्पिटिटिव T20 क्रिकेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 सीजन्स ओपनर? तो किन के द्वारा यहाँ पे जीता गया? वो है रीच किया गया ये 600 विकेट्स को सुनील नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो एंटिटी को जिन्होंने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ऑपरेशन ऑफ देयर हाइपर लोकल शॉपिंग ऐप पिन कोड को इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज बिजनेस टू बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर ऑफलाइन रिटेल्स। मतलब उन्होंने बिजनेस टू कस्टमर को बंद कर दिया, अब फोकस कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस पे। तो आइडेंटिफाई दैट एंटिटी, वो कौन है? वो है फ़ोन पे, राइट। इनका एप्लीकेशन था पिन कोड जिनको उन्होंने सिर्फ अब B2B में ही ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ सेमिनार ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन 5 दिसंबर इन न्यू दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? सो विच ऑफ द ऑर्गेनाइज द फर्स्ट या फिर विच ऑफ देम ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ सेमिनार ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया था पहला। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन क्रिकेटर जो कि बने फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू हिट 100 और मोर सिक्सेस इन T20 इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर। मतलब T20 में, राइट, 2020 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 100 से भी ज़्यादा छक्के मारे। वो हैं अभिषेक शर्मा। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, अपकमिंग प्लेयर आप इनको कह सकते हैं, आने वाले टाइम में बहुत फेमस होते हुए दिखेंगे आपको। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI जो अभी लॉन्च किया गया सिटी यूनियन बैंक एंड सैलरी से के द्वारा। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली ये लॉन्च किया गया है। रुपे क्रेडिट कार्ड है, UPI पे वर्क कर सकते हैं। तो क्या नाम रहेगा इस कार्ड का? ये है लेवल अप क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इनको अभी 35 कैप्टिव ब्रेड एंडेंजर्ड वल्चर्स रिसीव हुए हैं इन द 6th एडिशन एरिया, राइट। पूछा जा रहा है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जो कि पहली बन गई इन द वर्ल्ड टू लीगली बैन सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पे लीगली बैन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उन इंडियन बॉलर का नाम बताओ जो कि पहले हैं फ्रॉम इंडिया टू टेक 100 विकेट्स टेस्ट में भी, ODI में भी एंड T20 इंटरनेशनल में भी। तो कौन है? वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाय विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन अंडर द नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन? तो टारगेट क्या है? 2030 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी कौन सी इंडियन डेयरी ब्रांड है जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप रिन्यू करी है विद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन इन दिसंबर ताकि वो कंटिन्यू कर सके एज द ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर थ्रू 2026 के फीफा वर्ल्ड कप साइकिल के दौरान? तो अमूल के द्वारा ये पार्टनरशिप अभी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ रिन्यू करी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं Next, students, is our homework section. First question, what is the rank of India in the Asia Power Index? Give me top 3 here. Then second question, tell me recently who has been appointed as the chairperson? Who has been appointed as the chairperson of International IDEA? Tell me this. Then third question, which is the world's largest city? World's largest city. Also give me the world's most populated city, right? And which are the Indian cities in this rank, or what are the rank of the India's major cities such as Delhi and Mumbai? Then fourth question, tell me recently Oxford University Press, according to them, what is the word of the year 2025? And fifth question, students, tell me recently who has been appointed as the MD and CEO of, or tell me who has been appointed as the managing director? Who has been appointed as the managing director
of LIC, new managing director of LIC, and who he will be succeeding. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.